Assalamu alaikum students, I am Usman from Conceptual Chemistry Zone and today we will study the commercial preparation of sodium by down cell. The first part of this video will be in English and the second part will be in Urdu और हिंदी और अगर आप ये टॉपिक उर्दू या हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो को दरमियान से स्विच कर सकते हैं। शुक्रिया। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। इफ़ यू आर listening me for the first time or you are watching my video for the first time, I will request you to please subscribe my channel because I upload 2 or 3 this type of informative videos daily on this channel. Thank you so much. Now let's move to the topic. And the topic is commercial preparation of sodium by using down cell. First of all, sodium is generally produced by the electrolysis of fused sodium chloride. But the melting point of sodium chloride is very high, reaches up to 801 degrees centigrade. So we have to lower the melting point of sodium chloride. For lowering the melting point of sodium chloride, we use calcium chloride. When the calcium chloride is added in sodium chloride, the melting point will be lowered and the furnace will operate properly. The melting point will be lower up to 600 degrees centigrade. If we look at the instrumentation of down cell, we will come to know that the down cell has an anode which is made up of graphite and present at the center of the cell. And the cathode is made up of iron which is present at the left of the down cell. If we look at the above of the anode, we will come to know that there will be a bar for the collection of chlorine. This type of arrangement is best suitable to permit the electric current, and this arrangement is useful to prevent the mixing of chlorine and sodium when they are free from each other. When the current is passed, the sodium metal rises up and goes to a special compartment from where it is collected. The sodium produced by down cell is 99.9% pure. The whole process is carried out at 600 degrees centigrade and it has following advantages. The metallic fog is not produced. And the second advantage is the liquid sodium is easily collected at 600 degrees centigrade. And the third advantage is material of the cell is not attacked by the products formed during the electrolysis. During the whole process, the reaction which are taking place, sodium metal goes to cathode and take up an electron and will be reduced, and the chlorine loses an electron at anode and will be oxidized. So we can say that oxidation occurs at anode and reduction occurs at cathode, and sodium goes to cathode and the chlorine usually goes to anode. This is all about the commercial preparation of sodium by using down cell. जी तो हम इस टॉपिक को उर्दू में पढ़ते हैं। तो जैसे कि टॉपिक के नाम से जाहिर है कि इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे सोडियम मेटल को कमर्शियली डाउन सेल की मदद से कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो सोडियम को हमेशा हम सोडियम क्लोराइड जो मोल्टन हालत में होता है उसकी मदद से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब हम सोडियम को सोडियम क्लोराइड की मदद से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एक मसला ये आ जाता है कि सोडियम क्लोराइड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि तकरीबन 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट को लो करना बहुत ज़रूरी है और सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए सोडियम क्लोराइड में कुछ मिकदार कैल्शियम क्लोराइड की भी डाल दी जाती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाया जाता है। 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक
जो फर्नेस है वो अच्छी तरह ऑपरेट कर सकती है। तो ये जो है ये लाइन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये पूछते हैं कि जब हम सोडियम को डाउन सेल से प्रोड्यूस करते हैं तो सोडियम क्लोराइड को मेल्टिंग पॉइंट लोअर करने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, और सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितने से कितना जो है वो लोअर किया जा सकता है। तो ये आपने पहला पैराग्राफ जो है वो अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है जी इंस्ट्रूमेंटेशन की। इंस्ट्रूमेंटेशन में तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है तो उसमें मेन दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसका एनोड होता है और दूसरा उसका कैथोड होता है। इस सूरत में जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है और जो कैथोड होता है वो आयरन या फिर कॉपर का बना होता है, और ये एक सर्कुलर बार होती है। और एनोड से जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्लोरीन की कलेक्शन के लिए भी एक बार होता है। तो ये हो गई जी कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन, और इस तरह की इंस्ट्रूमेंटेशन जो होती है वो बहुत फेवरेबल होती है इस चीज़ के लिए कि करंट जो है वो सेल से आसानी से पास कर सके। और दूसरा इस तरह की इंस्ट्रूमेंटेशन का फ़ायदा ये होता है कि जब सोडियम और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद अलहदा हो जाते हैं तो बाद में उन्हें मिक्स नहीं होने दिया जाता, ताकि सोडियम जो है वो अलहदा रहे और क्लोरीन जो है वो अलहदा रहे, ताकि हम बाद में सोडियम को इकट्ठा कर सकें। अब जैसे ही डाउन सेल में से करंट पास करता है तो सोडियम जो है वो क्लोरीन से अलहदा हो जाता है और सोडियम एक स्पेशल कंटेनर में जमा होना शुरू हो जाता है, जहाँ से बाद में सोडियम को इकट्ठा कर लिया जा सकता है। अब इस सेल के मेन बेनिफिट्स ये हैं कि इससे जो हम सोडियम बनाते हैं वो 99.9% प्योर होती है, और ये जो सेल है ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो ऑपरेट करता है। यानी कि हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जा सकता है। इसके अलावा इसके कुछ और बेनिफिट्स भी हैं, जिसमें जो है कि मेटेलिक फॉग जो होती है वो इस सेल में प्रोड्यूस नहीं होती, और लिक्विड सोडियम जो है उसे आसानी से इकट्ठा कर लिया जा सकता है। और जो पूरा ये प्रोसेस, इसके दौरान जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सेल के मटेरियल से रिएक्ट नहीं करते, यानी कि सेल का मटेरियल जो है वो ख़राब नहीं होता। इसके अलावा जो एंड पे जो है वो उसने रिएक्शन दिए हुए हैं कुछ, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिएक्शन है। उसमें जो पहला रिएक्शन है वो उसने ओवरऑल रिएक्शन दिया हुआ है, जिसमें NaCl जो है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसने बताया हुआ है जी के कैथोड पे सोडियम जाता है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, और कैथोड पे सोडियम की रिडक्शन होती है, और इसी तरह एनोड पे क्लोरीन जाता है और क्लोरीन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन जो है अपने लूज़ कर देता है, और सोडियम की जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है। जिस तरह हमें पता है कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो इस तरह ये जो थे जी आपके रिएक्शन थे डाउन सेल के बारे में। तो ये था जी आज का आपका डाउन सेल का टॉपिक। और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।